Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2003. ये क्वेश्चन है हमारा टॉपिक डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स के अंदर कांस्टेंट मोशन के अंदर साइक्लॉइड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पार्टिकल स्लाइड डाउन ए स्मूथ साइक्लॉइड स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट हुज एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स इज बी। दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज पॉइंट ओ। वर्टेक्स से पी की डिस्टेंस दी हुई है, दिस इज बी। ये ले लेते हैं पॉइंट, दिस इज एट पॉइंट एस इज इक्वल टू बी and prove that its speed at any time t, let ये t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था, t इक्वल टू टी पर ये पॉइंट p पर आ गया। ये कह रहा है कि इस t पर जब जब p पर आएगा इसकी जो स्पीड है वो ये होगी एंड t इज द टाइम ऑफ द कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, s इज इक्वल टू हमको पता है 4a साइन साई होता है। ठीक है, एंड देन एट पॉइंट p इधर होगा अपना r mg cos साई, r माइनस mg cos साई इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर पर रो। रो बराबर होता है हमारा डी एस अपॉन डी साई, डी एस अपॉन डी साई मतलब 4a cos साई। सेकंड इक्वेशन ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी, पार्टिकल हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में और एस हमारा है पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन साई। ठीक है, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी साइन साई। साइन साई की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा करके डालेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस का जी एस अपॉन 4a, मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग इसको 2 ds अपॉन dt, इंटीग्रेट करेंगे ds अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g अपॉन 4 s स्क्वायर प्लस k इज द कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट एट t इज इक्वल टू 0, it is released from rest, so ds upon dt is equal to 0 and s is given as b at point at t is equal to 0. So the value of the k will be g upon 4a b square. So ds upon dt का whole square is equal to g upon 4a b square minus s square. And from this equation we can write the time of oscillation. This is the equation of the simple harmonic motion, and this can be compared with d square x upon dt square is equal to minus mu x, and in this case the time of oscillation is 2 pi upon root mu. Similarly, in this equation the time will be 2 pi upon root g upon 4a. So the time period will be 4 pi root a upon g. We will use this in the equation. T is equal to root pi is equal to 4 pi root a upon g. Now we will integrate it, ds upon dt is equal to root g upon 4a root v square minus s square. So the sign will be positive or negative. The velocity, the particle is moving in this direction and the positive s direction is this one. So we will take the negative sign. So ds upon root v square minus s square. We will take minus sign here. Root g upon 4a into dt, integrating both sides. So this will be cos inverse s upon b, and this will be root g upon 4a t plus c. So at t is equal to 0, we know that time is 0 and the s is equal to b. So c will be 0 because this will be cos inverse 1 and c is equal to 0. So the s is equal to b cos root g upon 4a into t. This is the value of s, but what the question is asking is, the question is asking for the proof that its speed at any time. And what is the speed? Speed is this one, ds upon dt का whole square. So we'll replace the value of from this ds upon dt का whole square is equal to g upon 4a b square minus s square. So b square will take common, 1 minus cos square root g upon 4a into t. So the ds upon dt square is equal to g b square upon 4a sin square root g upon 4a into t. We need to find the value of ds upon dt.
ds upon dt will be b by 2 root g upon a sine root g upon 4a into t. So the equation says that 2 pi b upon t and sine 2 pi t upon capital T. Okay, so we'll take the value of capital T. Capital T की value is 4 pi root a upon g. 4 pi root a upon g. So we'll take the value of root a upon g from here, t upon 4 pi. So b by 2 t upon 4 pi sine 1 by 2 t upon 4 pi into t. So the answer will be 2 pi b upon t sine 2 pi small t upon capital T ds upon dt. So this is the speed 2 pi b upon capital